Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yusuf. Today I am going to talk about the photochemistry of vision. That is the mechanism by which the photosensitive pigment is excited, or light absorption by the photosensitive pigment lead to excitation of the photoreceptors, rods and cones. We are going to talk about that. But before that, one ayah from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. सूरह अहज़ाब की आयत है. लक़द कान लकुम, बेशक यकीनन तुम्हारे लिए है, फी रसूलुल्लाह में, उस्वतुन हसना, जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में, उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना मौजूद है. कि लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, ये उसके लिए जो अल्लाह से के सामने पेश होने की तवक्को रखता है, जिसको ख्याल है कि मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है और क़यामत के दिन की उसको ख्याल है, तवक्को है. वज़कर अल्लाह कसीरा, और अल्लाह को खूब याद रखता है. जो अल्लाह को खूब याद करता है या याद रखता है, तो उसके लिए, तो जिसको अल्लाह का ख्याल हो, क़यामत का ख्याल हो, उसके लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है. उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाएगी, फिर आखिरत में कामयाबी होगी, अल्लाह को हम फेस कर सकेंगे, और क़यामत के दिन का यकीन है कि हमने अपना अमाल का हिसाब किताब देना है, तो फिर हुज़ूर की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है. अल्लाह पाक हमें इसकी समझ दीजिए. ट्रांसलेशन एग्जैक्टली देख लें कि यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्दा नमूना मौजूद है, हर शख्स के लिए जो अल्लाह ताला और क़यामत के दिन की तवक्को रखता है और बकसरत अल्लाह की याद करता है. अल्लाह पाक हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह पाक समझ अमल की तौफीक. So as I said, we will talk about the photochemistry of vision. The photosensitive pigment in rods and cones, it decomposes on absorption of light, and that decomposition leads to the stimulation of rods and cones. So photosensitive pigment decomposes on absorption of light. Outer segment of rods and cones, दोनों में the photosensitive pigment is present. We saw the structure of rods and cones, the shells of the membrane, the whole structure is, outer segment is formed by the many shells, 1,000, about 1,000 invagination of the cell membrane, and so it is outer segment of rods have concentration of the photosensitive pigment that is known as rhodopsin. Concentration of that is as high as 40% of the total mass. यानी पूरे सेल जो पूरा आउटर सेगमेंट है उसका 40% तो सिर्फ एक यही प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन रोडोप्सिन. So this is very high concentration. 40%, आधे के करीब is only this protein, that is rhodopsin. जब भी बनता है, this rhodopsin is a conjugated protein, a combination of a protein with something else. So it is the 11-cis-retinol, which is vitamin A, derivative of vitamin A. 11-cis-retinol plus a protein which is known as scotopsin. So scotopsin and 11-cis-retinol are combined together to form the rhodopsin. Light, absorption of light, photosensitive part is this 11-cis-retinol. 11-cis-retinol is converted into all-trans-retinol. If you have studied the organic chemistry, you must be knowing the arrangement of the radicals on the double bond के आर पार हैं तो they are trans, और एक तरफ हैं तो cis, something like that. So these are the isomer, that is all trans retinol or 11-cis retinol is the same compound. These are the two isomers, one is the trans form, one is the cis form. तो डबल बॉन्ड के इधर इधर लगा हुआ है या इधर लगा हुआ है. So this is the, so light
absorption of light by this chemical, this 11-cis retinol, converts it into all trans. So this light converts 11-cis retinol to all trans retinol. This is the change in the shape of this molecule. That is, 11-cis retinol can remain in combination with the scotopsin. ये combined रह सकता है. This is scotopsin protein. This is 11-cis retinol. It will remain there. If its shape changes, then active sites, they cannot combine with it, so it will decompose. So this causes conversion of 11-cis retinol into all trans retinol. This decomposes these two elements. That is, two components, they decompose, they dissociate. आपस से dissociation होती है. In the darkness ये उल्टा काम होगा. In the and the right, when the light is absorbed, यहाँ तक light is absorbed, there is decomposition of rhodopsin. जितनी देर लाइट तेज रहेगी, डिकम्पोजिशन ऑफ द रोडोप्सिन, आगे हम देखेंगे. दिस डिकम्पोजिशन लीड्स टू द एक्साइटेशन एंड हाउ वी सी, वो आगे हम देखेंगे. बट केमिस्ट्री यहाँ तक कितनी है, डिकम्पोजिशन विल अकर, रोडोप्सिन विल डिकम्पोज इनटू ऑल ट्रांस रेटिनॉल एंड विटामिन ए. दैट इज विटामिन ए, दैट विल कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए एंड दिस प्रोटीन अलग अलग हो जाएंगे. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन ए, पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, उनकी कॉम्बिनेशन, तो डिसोसिएट हो जाएंगे अलग. तो विटामिन A will be formed and protein will be formed. This is not photosensitive pigment. So when in the darkness light is not there, then this all trans will be converted again by the simply absence of light. There are enzymes as well, isomerases. एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए isomerases are there. They are there. So they will be in the darkness. Isomerase will convert it into all trans into again 11-cis retinol. When 11-cis retinol is there, it will again combine with the scotopsin, and there will be resynthesis. More synthesis of the rhodopsin will occur in the darkness. जितनी देर darkness में रहेगा, more and more synthesis is possible. Up to 40% of the outer segment हमने देख लिया. This is the diagram. That is, rhodopsin is there. Light energy is absorbed. It is converted into, so light will be absorbed. There will be gradually dissociation. It will be converted first into beta-rhodopsin, then it will be converted into lumirhodopsin, then it will be converted into meta-rhodopsin 1, then it will be converted into meta-rhodopsin 2. ये क्या है? These are the different stages of dissociation. थोड़ा सा जुदा हुआ है dissociation, then जुदा होते होते, these are the, और this happens in timings भी लिखी हुई है इस diagram में. This diagram is, this chart is from your Guyton and Hall. That is, light energy absorbed within picoseconds, it will be converted into beta-rhodopsin. This is very quick, and that is also within nanosecond it will be converted into lumirhodopsin. Within microsecond it will be converted into meta-rhodopsin 1. Within milliseconds it will be converted into meta-rhodopsin 2. This meta-rhodopsin 2 is our requirement. इसकी बात करते हैं. We need this meta-rhodopsin 2. This is known as activated rhodopsin. ये काम करता है एक्साइट करने के लिए, उसको हम देखते हैं. सो इट इज वेरी क्विक, विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आप कह लें, नैनो सेकंड, पिको सेकंड का काम है. दिस इज वेरी क्विक. दिस इज ग्रेजुअल डिसोसिएशन. मेटारोडॉप्सिन 2 जब बन जाएगा ना, इसको हम आगे देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे हाउ इट विल एक्साइट द रॉड. So meta-rhodopsin 2 के within seconds फिर अगले में it will be converted into scotopsin. Complete dissociation between the protein and this vitamin A will occur, and 11-cis retinol will completely, all trans retinol will completely dissociate from the scotopsin. वो जुदा हो गया, and that all trans retinol may be converted into all trans retinol. Retinol is aldehyde, retinol is alcohol, OH group. So एक ही बात. So it is vitamin A. It is a form of vitamin A. आगे भी जा सकता है. This all trans retinol is converted into all trans retinol ester. Vitamin A, वो भी vitamin A. This is form of the vitamin A. अगली स्लाइड पे मैं दिखा रहा हूँ. So light energy जब absorb होगी, cycle, rhodopsin will be decomposing into scotopsin and vitamin A. ये हमारा पहला काम है. This is photochemistry. This is light energy. Light energy absorption causes decomposition of the rhodopsin into vitamin A and scotopsin.
ये डिवाइड हो जाएगा। और अपोजिट भी यहाँ ही बात कर लें, व्हेन लाइट is not there, darkness में क्या होगा, opposite will happen. Scotopsin to scotopsin F, that is what protein. This all trans retinol will be converted into 11 cis retinol. All trans retinol will be converted into 11 cis retinol, and then it will be converted into 11 cis retinol. और vitamin A दूसरी form जो है, there will be formation of 11 cis retinol. हमारी जरूरत जो है 11 cis retinol जब बन जाएगा, it can combine with the scotopsin for the new synthesis, resynthesis of the rhodopsin. So darkness में cycle will go in this direction, and in darkness में cycle will go in the synthetic process of the rhodopsin, and in the light energy absorption will cause the decomposition of the rhodopsin into vitamin A part and the scotopsin part. This is known as photochemistry or rhodopsin retinol visual cycle. फोटोकेमिस्ट्री इसको कह सकते हैं, रोडोप्सिन रेटिनॉल विजुअल साइकिल। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने से डिकम्पोज होता है, अंधेरे में रीसिंथेसिस होती है। विटामिन ए ये 11 सिस रेटिनॉल और ऑल ट्रांस रेटिनॉल, एल बोलने के लिए एल बोल रहा हूँ, रेटिनॉल दैट इज एल्डिहाइड, it is an aldehyde. ये वो form है, 11 cis form combined with it, this cannot combine. But 11 cis retinol, that is aldehyde, is converted into OH alcohol group. So the retinol or all trans retinol उसी तरह हो सकता है. And the 11 cis retinyl ester, all trans retinyl ester, all these are the forms of vitamin E. ये सारे विटामिन ए है। एंड हमने पिगमेंट सेल लेयर के फंक्शन में देखा था, विटामिन ए स्टोर्ड इन दैट पिगमेंट सेल, जिसके अंदर ये रॉड्स आर एम्बेडेड, उसके अंदर टच किए हुए हैं रॉड्स। सेकंड लेयर वही है ना पिगमेंट सेल की बात, रॉड्स एंड कोन की लेयर है। सो these all are the different forms of vitamin A or derivative of vitamin A। कैसे विटामिन ए नहीं सबको कहें, और डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए है। तो दिस इज प्रेजेंट इन दी रॉड्स के अंदर भी मौजूद है, कोन के अंदर भी मौजूद है, और पिगमेंट सेल के अंदर मौजूद है अगर और चाहिए तो विटामिन ए। सो विटामिन ए इज मस्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द rhodopsin as well as the iodopsin, वो जो हम देखेंगे कौन का फोटोसेंसिटिव पिगमेंट थोड़े से फर्क के साथ। Vitamin A is absolutely essential for the formation of photosensitive pigments both. Very high concentration of rhodopsin is required to see in the darkness. ये आ जाएं आप, ये क्या लफ्ज सेंटेंस बोला है? To see in the darkness, sensitivity, more sensitive retina is required. डिम लाइट है, वेरी डिम लाइट है, तो उसको देखने के लिए रेटिना शुड बी वेरी सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी इज अचीव्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ rhodopsin। सो डार्कनेस में देखने के लिए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ rhodopsin इज रिक्वायर्ड। So in the darkness, very high concentration of rhodopsin is required to see in the darkness। तो यहाँ ही आप की बात कर लें, if rhodopsin के लिए we need vitamin A। If a person has got vitamin A deficiency, तो रोशनी में तो चूंकि rhodopsin concentration very small amount is required, minimum sensitivity is required bright light में देखने के लिए, वो देख सकेगा। बट व्हेन द पर्सन इज इन द डार्कनेस, फॉर द टू सी इन द डार्कनेस, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ rhodopsin, फॉर विच वेरी हाई कंसंट्रेशन, नॉर्मल कंसंट्रेशन वेरी विटामिन ए इज रिक्वायर्ड। इफ विटामिन ए इज डेफिशिएंट, नॉर्मल से भी कम है, देन द पर्सन विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ rhodopsin टू वो जो 40% जो हमने कहा है, द पर्सन विल बी नाइट ब्लाइंडनेस, इसी को कहते हैं विटामिन ए की कमी से जो होती है। बिकॉज ऑफ दिस कि vitamin A is required for the very high concentration to achievement in the rods, high concentration चाहिए। So very high concentration of rhodopsin is required to see in the darkness, so जिसके लिए vitamin A is required। If there is vitamin A deficiency, there is night blindness, dark blindness, अंधेरे में नहीं नजर आता उसको, रात को ठीक नजर नहीं आता। ऐसे लोगों को vitamin A दे तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। This diagram is डार्क एडाप्टेशन कर्व। इफ मैं जरा सा पीछे जाऊं, सॉरी पीछे जाना है। इफ अ पर्सन रिमेन्स इन द लाइट, दिस साइड ऑफ दिस साइकिल
rhodopsin retinal visual cycle or photochemistry will go in this direction, that is decomposition of rhodopsin. ब्राइट लाइट में सारा दिन गुजारा है, बाहर धूप में या ब्राइट लाइट में गुजारा है, rhodopsin decomposes, minimum concentration of rhodopsin will be there in this person जो कई घंटों तक ब्राइट लाइट में रहा है. And when this person enters into a dark room, और रात हो जाती है, when this person enters into the darkness, तो उसको हम देखने लगे हैं, that is when this person into the darkness में बना है, तो because of the most of the rhodopsin has decomposed in several hours in the bright light, there is minimum concentration of rhodopsin. bright light के लिए तो चाहिए ही बहुत थोड़ी rhodopsin. ब्राइट लाइट के लिए थोड़ी सी भी अगर रोडॉप्सिन मौजूद हो तो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट इज सच दैट इट इज रेटिना सेंसिटिव एनफ, इसके लिए थोड़ा सा भी हो तो लाइट तो बहुत ज्यादा है. But in the darkness, when the sensitivity at its minimum, when the person enters into the bright light, the person will not be able to, it will be complete darkness, कुछ भी नजर नहीं आएगा. Even the कहीं छोटा सा बल्ब लगाओ वो भी नजर नहीं आता, इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी कम हुई होती है कि थोड़ी सी लाइट भी कहीं पड़ी हो तो नजर नहीं आती, ब्राइट चीज भी पड़ी हो तो अंदर कंप्लीट डार्क में कहीं पे ब्राइट चीज भी नजर नहीं आता. So because the sensitivity is at its minimum, when this person remains in the darkness for some time, then the gradually, this is the retinal sensitivity against the minutes time in the darkness, उसको प्लाट किया हुआ है, it is minimum. But with the passage of time, it is the sensitivity, red graph, red जो curve है, this is showing sensitivity has gone to 10 within almost 1 minute. 1 मिनट के अंदर 1.5-2 मिनट के अंदर, अगर 2 मिनट भी कहें, it has gone to 10 times increase sensitivity. हुआ क्या है, दो साइकिल, मैं फिर वापस जाता हूँ. In the darkness हुआ क्या है, in the darkness this part is playing. Darkness में all these are converted into finally into 11 cis retinal and it again combines, but it will take time, minutes. वो तो पिको सेकंड में हो रहा था काम, नैनो सेकंड में हो रहा था, बट दिस विल टेक टाइम. ये हम देख रहे हैं 1-2 मिनट लग गए. सो विद इन मिनट्स, सो फ्रेश सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन विल बी टेकिंग प्लेस, मोर एंड मोर रोडोप्सिन सिंथेसिस विल बी टेकिंग प्लेस. सो वी अगेन कम टू दैट, अगेन द सेम डायग्राम. सो विद इन 2 मिनट्स एंड अगले 10 मिनट्स में इट हैज गॉन टू दिस ऑलमोस्ट 80 टाइम्स, देन 20 मिनट्स में इट हैज गॉन टू 5000 टाइम एंड 40 मिनट में इट हैज गॉन टू ऑलमोस्ट 10,000 times sensitivity has increased. Now this person is looking. So gradually when the sensitivity of retina is increased, उसको थोड़ा थोड़ा नजर आने लगे, पता चलेगा वो छोटा सा बल्ब भी लगा हुआ है, छोटा सा बारीक बल्ब पड़ा हुआ है कमरे में, पहले तो नजर ही नहीं आता. So the person will be able to gradually see the things and brighter things will be visible. कुछ उसको नजर आने लगेगा. So concentration has gone to this 10,000 times. यानी 10,000 times less light भी हो तो person will be able to see उसके मुकाबले में. So gradually, this is known as dark adaptation. This is dark adaptation curve. ये जो red curve हमने देखी है, this is dark adaptation curve. एक बात यहाँ पे भी कर्व में नजर आ रही है और लिखी हुई भी है, उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं यहीं पे. इनिशियल पार्ट ऑफ दिस एडाप्टेशन इज कौन एडाप्टेशन, ये लिखा हुआ है. वेरी क्विक एडाप्टेशन जो विद इन 1 मिनट, ये जो 10 टाइम्स बड़ी है, वेरी क्विक एडाप्टेशन ये जो शुरू में हुई है, द शार्प इज कर्वली, बहुत सीधी है, वेरी क्विक एडाप्टेशन. और फिर बाद में देखते हैं ग्रेजुअल है, दिस इज ग्रेजुअल और ग्रेजुअल होती जाती है. तो दिस वेरी क्विक एडाप्टेशन इज द कोन एडाप्टेशन. कोन्स आर क्विकली एडॉप्टिंग बट देयर इज लिमिट. कोन एडाप्टेशन एक चंद मिनट तक, 10 मिनट तक और समथिंग लाइक दैट, तब तक वो अडॉप्ट करते हैं, बट देन देयर एडाप्टेशन स्टॉप, दे कैन नो मोर. कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर भी है. तो कौन की अडॉप्टेशन शुरू में होगी, द पर्सन विल बी एबल टू, जब थोड़ी थोड़ी डिम लाइट हो तो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कलर्स. लेकिन ज्यादा डार्क हो जाए, अंधेरा ज्यादा हो जाए, तो वी विल बी एबल टू सी मैनी थिंग्स बट वी कांट डिफरेंशिएट डिफरेंट कलर, ऑरेंज कलर या पिंक कलर या डार्क, ऑल कलर्स आर कलर्स. फर्क पड़ेगा, ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी सी भी पॉसिबल है, लेकिन कलर अप्रिसिएशन इज नॉट पॉसिबल इन द डार्कनेस. डार्कनेस में बहुत सी चीजें देख सकते हैं लेकिन कलर हम प्रॉपर बिकॉज ऑफ द कोन एडाप्टेशन किसी हद तक है.
कम ब्राइट ज्यादा डार्कनेस ना हो तो कलर नजर आते हैं, डार्क ज्यादा हो जाए वी आर एबल टू सी द थिंग्स किसी हद तक बिकॉज ऑफ द डार्क में रॉड adaptation there which is they are responsible for only black and white vision, black white, so this is dark adaptation curve. तो इसको कौन एडाप्टेशन एंड रॉड एडाप्टेशन की बात की, कौन एडाप्टेशन इज लिमिटेड, क्विक है लेकिन लिमिटेड है, एंड डार्क रॉड एडाप्टेशन ब्लैक एंड व्हाइट एडाप्टेशन इज relatively slow but it may continue for even hours, ये 40 मिनट तक तो दिखाए हुआ है, still it is going up, so quite ज्यादा एडाप्टेशन उनकी पॉसिबल है. Now we come to that very critical point जो मैंने पिछले लेक्चर में शायद जिक्र किया था. We are not talked about the proper detailed functions of how they are excited rods and cones. Today we are able to explain that how the rods and cones are excited. This is a rod. Normal physiology of rod is normally inner segment is constantly pumping the sodium to the exterior. You see in inner segment of rods and cones both. Rod को हमने उठाया हुआ है, cone ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, cone ब्रैकेट में लिखा है, पिक्चर रॉड की है इसलिए रॉड की बोल रहे हैं, बोथ दोनों रिसेप्टर पर एप्लीकेबल है दिस. So inner segment is pumping the sodium to out, so it is creating negativity. It's okay. Pumping of the sodium to the sodium potassium pump यही कर रहा होता है. बहरहाल यहाँ पे special pump is there which is pumping the sodium toward the exterior, but there is inner segment की cell membrane जिसमें वो rhodopsin है ज्यादातर. Inner segment of the cell, outer segment की cell membrane is leaky to sodium. Sodium leaks and वो लिखा हुआ है leakage current decreased by the decomposing rhodopsin. इसको फिलहाल छोड़ें. There is leakage of sodium. इनर सेगमेंट उसको बाहर पंप करता है, आउटर सेगमेंट से कुछ उसमें लीक करके दोबारा वापस चल जाती है. तो ये बैलेंस इज मेंटेन्ड. कितनी सोडियम पंप बाहर हो रही है, कितनी लीक कर रही है. तो आउटर सेगमेंट इज लीकी टू सोडियम एंड न्यूट्रलाइजेस द सम ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएटेड बाय बैलेंसेस एट -40 millivolts. दिस इज द say resting membrane potential in rods and cones. Rods and cone का resting membrane potential by this pumping of the sodium toward the exterior and leakage of the sodium to balances at -40 millivolts, interior being negative. Resting membrane potential जिसको कहते हैं हर जगह. तो this is resting membrane potential. वो जो एक बात लिखी हुई है ये इस पे ये लीकेज करंट, लीकेज ऑफ द करंट, इसकी अहमियत हम आगे बात करते हैं. When rhodopsin decomposes, this leakage is stopped. चलो यहाँ से इतना जिक्र कर देते हैं. लीकेज करंट डिक्रीज बाय द डिकम्पोजिंग rhodopsin. ये लीकेज ऑफ द सोडियम इज स्टॉप्ड, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे. तो दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट -40 millivolts इज बाय दिस मैकेनिज्म. Constant pumping of the sodium toward the exterior by the inner segment and leakage back some of the sodium into the outer segment, and it is resting membrane potential is -40 millivolts. Now how the rods will be excited by this? Photoreceptor potential is different from all other photoreceptors. All other receptors, touch receptors, pressure receptors, thermal receptors, cold receptors, or this here जो हमने नहीं पढ़ा अभी, this receptors are the taste receptors. कोई भी receptor है बॉडी में, पसीनियन कार्पसल मैकल डायबिटिक जो भी हमने नाम लिखा हुआ है, receptors आपने sensory system, all the receptor when they are excited by their respective stimulus, their excitation is in the form of depolarization. Resting membrane potential is reversed. इसको हम depolarization कहते हैं. So it is depolarization. All the receptors are depolarized except this. Photoreceptor potential is different from all other receptors. किस में different है? It is hyperpolarization, not depolarization. When they are excited by their stimulus, what is the stimulus for these receptors? It is light.
लाइट जब इसको मिलेगी दे विल बी हाइपरपोलराइज, डीपोलराइज नहीं होंगे। क्या मतलब है? -40 millivolts will not be converted into 0 or +10. It will be -40 will go into -41, -45, -50, 60. So resting membrane potential is increasing, which is known as hyperpolarization. Already polarized है -40 पे। लाइट एनर्जी इस रेस्पेक्टिव स्टिमुलस इसका क्या है? लाइट विल कॉज हाइपरपोलर, नॉट डीपोलराइजेशन। डीपोलराइज बाकी सारे रिसेप्टर डीपोलराइज होते हैं एक्सेप्ट दीज रॉड्स एंड कोन, दे आर हाइपरपोलराइज। ये देखते हैं कि कैसे हाइपरपोलराइज होते हैं। Excitation by light causes decreased conductance of the sodium into the outer segment। वो जो डायग्राम में देख के आए हैं कि when the rhodopsin decomposes, वो लीकेज वाली जो सोडियम हो रही थी into the outer segment, वो लीकेज स्टॉप हो जाती है। तो क्या होगा? पंप इज कंटिन्यूअस, उसको कुछ नहीं हुआ। लीकेज बैक इज स्टॉप्ड बाय द डिकम्पोजिंग रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जब डिकम्पोज होता है वो लीकेज वाले गेट बंद हो जाते हैं। तो क्या होगा? सोडियम पंप हो रही है, लीकेज बैक खत्म हो गया, तो सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज आयन, इट विल क्रिएट मोर नेगेटिविटी, so it will be hyperpolarized। लीकेज खत्म हो गई, लीकेज वाज न्यूट्रलाइजिंग द नेगेटिविटी, ये पॉजिटिव जाना बंद हो गया, so it will become more negative। So inner segment continues to pump the sodium as I have explained, and this creates a hyperpolarization। लीकेज तो बंद हो गई, पंपिंग जारी है, सोडियम बाहर जा रही है, अंदर आना बंद हो गया, इट विल क्रिएट मोर नेगेटिविटी, सो हाइपरपोलराइजेशन विल अकर। ये भी अब याद रखें, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बात की थी। All the neuronal elements in the retina except ganglion cell, there is no production of action potential। यहाँ पे भी action potential नहीं पैदा हुआ। हाइपरपोलराइजेशन कितनी मैग्नीट्यूड की? जितनी ज्यादा लाइट होगी। इफ लाइट इज एट द मिनिमम हाइपरपोलराइजेशन में भी 40 से 41 हो जाए, 42 हो जाए। अगर लाइट ज्यादा है इट विल गो टू 60। So graded stimulation is there। बाकी रिसेप्टर में graded stimulation नहीं है। If I touch here, if the stimulus is sub-minimal or sub-threshold है, I will not feel the touch। लेकिन अगर प्रॉपर मिनिमम स्टिमुलस से ऊपर होगा, थ्रेशोल्ड से होगा, ओनली देन आई विल बी एबल, बिकॉज दिस विल बी स्टिमुलेटेड, एक्शन पोटेंशियल मस्ट बी प्रोड्यूस। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, सिंपल हाइपरपोलराइजेशन ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड that is sufficient। वो उसके लिए that will be conducted to next neuronal element, bipolar cell or horizontal cell। So this creates hyperpolarization by this process। डिग्री ऑफ हाइपरपोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लाइट। अभी मैंने बोला है अगर थोड़ी लाइट है थोड़ी सी हाइपरपोलराइजेशन, ज्यादा लाइट है ज्यादा हाइपरपोलराइजेशन। अभी भी हमने डिस्कस नहीं किया हाउ हाइपरपोलराइजेशन, सिर्फ हमने लीकेज बैक रुका कैसे है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन, लाइट एनर्जी फोटोन एक्टिवेट्स 11 सिस रेटिनॉल। ये तो हमने फोटोकेमिस्ट्री में वो विजुअल साइकिल में देख के आ गए हैं। 11 सिस रेटिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू मेटारोडॉप्सिन 2। मैंने कहा था दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, हमें फाइनल मेटारोडॉप्सिन 2 चाहिए। तो मेटारोडॉप्सिन 2, बेथोरोडॉप्सिन, लुमिनोडॉप्सिन वगैरह, मेटारोडॉप्सिन 1 एंड फाइनली मेटारोडॉप्सिन 2। दिस मेटारोडॉप्सिन 2 इज इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? This metarhodopsin 2 is called activated rhodopsin। ये काम करता है, it activates an enzyme। यहां पे ही एंजाइम लगा हुआ है here, किसमें? इसी outer segment में एंजाइम लगा हुआ है which is known as transducin। Transducin is an enzyme which is present in inactive form। Metarhodopsin 2 activates it। वो एंजाइम है, एंजाइम क्या करेगी? That transducin causes activation of another enzyme, phosphodiesterase। वो क्या करती है? Phosphodiesterase causes breakdown of cyclic GMP। cyclic AMP के बिल्ली phosphodiesterase होती है। This is the cyclic GMP। cyclic GMP is present in the outer segment। That cyclic AMP, ये इसको cyclic AMP समझ लें, ये इसको cyclic AMP is present in certain channels। So this cyclic AMP is a splint which is present in the channels and those channels are kept open for the sodium।
ये सोडियम इसके अंदर जाएगी बिकॉज दिस साइक्लिक एमपी कीप्स दोस चैनल्स ओपन. When this hydrolysis or the breakdown of the cyclic AMP occurs, this is no more available, this will close. This splint is gone. So this cyclic AMP is a splint present in those leaky sodium channels. So this meteorodopsin cycle, formation of the activation of transducin and activation of phosphodiesterase, this will cause the breakdown of this cyclic AMP. This splint is gone, the channel will close, sodium will not leak. Sodium will not leak, so it will be the receptor will be hyperpolarized. So that is, so the GMP keeps the sodium leak channel open. जब ये नहीं होगा, this will cause the breakdown of cyclic GMP, causes the blockage, blocks the leakage of the sodium and the amplification. So this causes the hyperpolarization. ये hyperpolarization हो गया. लेकिन एक सेंटेंस जो मैंने अभी वापस मिटाया है, what is that? इसको खोलता हूं. Amplification of every step is the rule. What is the rule? This meteorodopsin 2 has been formed. It will activate several transducins. So each one transducin will cause several formation of the photodiesterase. So it is increasing amplification at every step. So एक meteorodopsin 2 may lead to the formation of breakdown of several cyclic GMPs. So there is amplification. ये पहले भी आपने पढ़ा होगा कहीं, amplification every step. So this causes, that's how the rods and cones are excited, and excitation is in the form of hyperpolarization, not action potential. Hyperpolarization, magnitude of hyperpolarization will be dependent upon amount of light. Rhodopsin kinase inactivates the meteorodopsin. Finally, meteorodopsin 2 has to be removed. इसको meteorodopsin is hydrolyzed by the enzyme again present, which is known as rhodopsin kinase. ये meteorodopsin 2 को inactivate कर देती है. तो meteorodopsin 2 तो में complete dissociation between scotopsin and the 11 all-trans retinol will occur. डार्क एडाप्टेशन कर्व हम अभी पिछले देखिए. लाइट में होगा तो क्या होगा? लाइट अडॉप्टेशन उसको बोलेंगे. लाइट अडॉप्शन में एक्सपोजर टू लाइट फॉर सेवरल आवर्स, मैंने एग्जांपल दी थी. अ पर्सन रिमेन्स इन द ब्राइट लाइट फॉर सेवरल आवर्स, तो rhodopsin decomposes and it goes to the minimum level. कई घंटे तक ब्राइट लाइट में रहा है. rhodopsin concentration in the eyes is at its minimum. हमने बयान किया था. Most of the rhodopsin is dissociated into vitamin A and vitamin A और प्रोटीन बन गए, vitamin A बन गए. This concentration of rhodopsin in rods and photosensitive pigment for cone is at minimum. वो मिनिमम है. अब इस वक्त जब दाखिल होगा तो वो डार्क एडाप्टेशन का जो हमने एक्सप्लेन किया. So sensitivity of eye at this level is at its minimum जो हमने डार्क एडाप्टेशन कर्व में देखी हुई है. And this is known as light adaptation. ये लाइट एडाप्टेशन है. इसमें एक और काम एलिमेंट अभी मिसिंग है. लाइट अडॉप्टेशन में प्यूपिल का भी रोल है, वो आखिर में हम देख रहे हैं. डार्क अडॉप्टेशन में भी प्यूपिल का रोल है. सो दिस इज, ये लाइट अडॉप्टेशन इज दिस, the cycle goes in this direction, that is rhodopsin concentration is at minimum, vitamin A में हो जाता है, इसकी concentration कम हो जाती है. This is the light adaptation. तो डार्क एडाप्टेशन में लाइट एडॉप्टेड पर्सन व्हेन एंटर्स इनटू द डार्कनेस ही कांट सी. ये एक्सप्लेन किया हुआ है, दोबारा ये आ गया. इंक्रीज कन्वर्शन ऑफ विटामिन ए इनटू 11 सिस रेटिनॉल विल अकर, वो जो हमने डार्क एडाप्टेशन कर देखी थी. एंड मोर सिंथेसिस ऑफ rhodopsin एंड कलर फोटोसेंसिटिव पिगमेंट विल अकर. कलर एडाप्टेशन, कंसंट्रेशन ऑफ फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स विल इंक्रीज इन रॉड्स एंड कोन्स एंड सेंसिटिविटी ऑफ द रेटिना टू लाइट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. और डार्क में उसको थोड़ा थोड़ा नजर आने लगता है. द पर्सन ग्रेजुअली कैन सी मोर एंड मोर इन दैट डार्कनेस, और जिसको डार्क एडाप्टेशन कहते हैं, वो कर्व हमने एक्सप्लेन की हुई है. एंड ये वही कर्व है. तो इट इज लाइट एडाप्टेशन पे यहाँ पे है, डार्क एडाप्टेशन उधर चला जाएगा और भी रहेगा घंटों में. तो बढ़ता डार्क एडाप्टेशन वर्सेस कोन एडाप्टेशन, थोड़ी सी बात हमने कर ली है. कोन एडाप्ट मोर रैपिडली, वो उसमें कर्व में नजर आ रहा था. And cone adaptation ceases within a few minutes. तेजी से they adopt quickly, but their adaptation is limited.
आफ्टर अ फ्यू मिनट देयर एडाप्टेशन इज स्टॉप्ड, वो फर्दर अडॉप्ट नहीं कर सकते, फर्दर इंक्रीज कंसंट्रेशन इज नॉट पॉसिबल इन कौन, वो मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं जल्दी। सो कलर परसेप्शन इज पुअर इन द डार्कनेस, क्योंकि उनकी अडॉप्टेशन एक मिनिमम है, उस वक्त तक कलर नजर आते हैं, उसके बाद अगर डार्कनेस ज्यादा है तो पर्सन कांट सी द कलर्स। So rods adapt slowly, but their adaptation continues for minutes or even hours. वो कंटिन्यू कर सकती है। So many rods, और उसका एक और वजह भी है कि rods की there is more convergence by the rods, so थोड़े थोड़े rod मिलकर उसको एक्साइट कर लेते हैं, उसकी वो ये कन्वर्जेंस की वजह से भी रॉड का ज्यादा काम करना। कौन तो ज्यादा अडॉप्ट नहीं करते, अगर 2-4 कौन एक पे चले गए तो स्टिमुलेट कर लिया तो कर लिया, वरना नहीं। रॉड तो 100 के हिसाब से दे कन्वर्ज ऑन द सिंगल गैंग्लियन सेल, इस वजह से मैनी रॉड कन्वर्ज ऑन द सिंगल ऑप्टिक नर्व सेल, इसलिए भी रॉड की अडॉप्टेशन इज मोर प्रोलॉन्ग्ड। Concentration of rhodopsin can reach up to 40% of the total mass of the outer segment, ये पहले भी हम बात करते हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो अचीव कर सकते हैं 40%, नियर हाफ के करीब होगी। सो ये तो हो गए adaptation by the increasing or decreasing concentration of photosensitive pigment in rods and cones both। और भी मैकेनिज्म है इसमें इन्वॉल्वमेंट डार्क अडॉप्टेशन के लिए, स्पेशली दी फंक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिलरी डायलेटेशन इन द डार्कनेस। डार्कनेस में प्यूपिल भी डायलेट करता है। प्यूपिल की डायलेटेशन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट शुड इंक्रीज। प्यूपिल अगर कंस्ट्रिक्टेड है, अ सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से 100 लाइट रेज और 100 मिलियन लाइट रेज बोल, दे आर एंटरिंग इनटू द कंस्ट्रिक्टिंग प्यूपिल। लेकिन इफ द प्यूपिल डायलेट्स and from the same point source of light, number of light rays entering into the dilated pupil will be tremendous, वो बढ़ जाएंगे। So pupillary adaptation in the darkness is in the form of the pupillary dilatation, और light में in the form of pupillary constriction, वो भी light adaptation में pupil will constrict, तो can increase the amount of light dilate करके up to 30 times, ये हमने pupillary function में देखा था, 1 to 30 times का difference है। Pupillary constriction in bright light, it reduces the amount of light, and वही है, अभी 1 million light rays गुजर रही हैं तो उसको कम करेंगे 1000 light rays गुजर रही होंगी। So the number of light rays from the single point source of light, ये याद रखें, from a single point source of light कम हो जाएंगे। ये तो प्यूपिलरी अडॉप्टेशन है। न्यूरॉनल अडॉप्टेशन भी होती है, हर जगह होती है। बाकी सेंसरी रिसेप्टर में न्यूरॉनल आपने अडॉप्टेशन देखी होगी। टच मिसाल के तौर पर भी, आई फील डोंट दिस, ऐनक लगी हुई फील नहीं करता मैं, अब तो मैं कॉन्शियसली सोचा है तो ऐनक फील करता है, अदरवाइज फील नहीं करता। कपड़े लगे हुए आई डोंट, ये टच कर रहे हैं, वी आर नॉट फीलिंग द टच। इसको मैंने रखा है तो दिस इज फेल्ट, अगर इसको मैं 1 घंटे तक रखूं तो इट विल नॉट बी फेल्ट, इसकी टच खत्म हो। अडॉप्टेशन, न्यूरॉनल अडॉप्टेशन, मुंह में आपने कुछ डाला है, इट इज वेरी स्वीट, थोड़ी देर बाद स्वीटनेस उसकी खत्म हो जाती है, खत्म नहीं होती। न्यूरॉन्स अडॉप्ट, चीनी मुंह में रखी हो वो कम मीठी लगने लगती है थोड़ी देर बाद। तो न्यूरॉनल अडॉप्टेशन इन द आई इज आल्सो देयर, ये भी अडॉप्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉनल एलिमेंट्स अडॉप्ट टू द चेंज लेवल ऑफ स्टिमुलेशन, यानी शुरू में स्टिमुलेशन ज्यादा होती है, फिर स्टिमुलेशन कम हो जाती है। अडॉप्टेशन बाइपोलर सेल में भी होती है, एमेक्राइन सेल में भी होती है, इवन हॉरिजॉन्टल गैंग्लियन सेल, सारे सेल्स में अडॉप्टेशन। शुरू में एक्साइट करें, ज्यादा एक्साइट होते हैं, एक्साइटेशन कंटिन्यू करें तो उनकी एक्साइटेशन का लेवल जरा सा कम हो जाता है। अडॉप्टेशन इज देयर। तो आखिरी 1-2 स्लाइड हम इंपॉर्टेंस, देयर आर मेनी डार्क एंड ब्राइट एरियाज ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज इन एवरी इमेज। ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे ब्राइट लाइट है, वहाँ पे कम लाइट है, वहाँ पे एक कलर की लाइट है, वहाँ पे ज्यादा डार्क एरिया है। देयर आर मेनी शेड्स ऑफ लाइट्स, किसी जगह कम लाइट आ रही है, किसी जगह ज्यादा लाइट है। सो देयर आर मेनी डार्क एरियाज, मेनी ब्राइट एरियाज इन एवरी सीन। तो इसका क्या मतलब है, वो जहाँ पे डार्क चीज फोकस हो रही है रेटिना पे, वहां पे डार्क अडॉप्टेशन होगी। जहां पे ब्राइट चीज फोकस हो रही है रेटिना पे भी, वो ये जो अभी लाइट अडॉप्टेशन डार्क अडॉप्टेशन हमने देखी है, दैट विल अकर इन द रेटिना। So there are several areas, dark areas, bright areas of the different intensity in every image. So the retina must respond to all these. तो रेटिना की जगह जगह पे किसी जगह लाइट अडॉप्टेशन, डार्क अडॉप्टेशन, कलर अडॉप्टेशन, लाइक दैट सारी अडॉप्टेशन टेक्स प्लेस। फॉर डार्क अडॉप्टेड आई, इवन डार्कर स्पॉट्स लुक वेरी ब्राइट इन द ब्राइटर लाइट। अब
इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करने में। अ पर्सन इज इन द डिम लाइट, जो इस कमरे में है, ये लाइट जितनी भी है, बट इफ आई एंटर फ्रॉम दिस रूम इनटू द सन में जब जाऊंगा, अभी जो डार्क लाइट एरिया है, माई रेटिना इज अडॉप्टेड टू दैट लाइट, और जो डार्क एरिया, माई रेटिना फॉर दैट इमेज इज अडॉप्टेड टू ब्राइट। व्हेन आई एंटर इनटू दैट एरिया, देन इवन ब्राइट एरिया के लिए भी वो लाइट इज टू मच, वो भी ब्राइट एरिया, डार्क एरिया के तो टू मच है ही, लेकिन फॉर सनलाइट इज मच मच मोर इंटेंस देन दिस ट्यूब लाइट। तो क्या है, फॉर डार्क अडॉप्टेड इवन द डार्कर पार्ट्स इवन लुक ब्राइट इन द ब्राइट। तो डार्क अडॉप्टेड आई है मेरी, बैठ जाऊंगा तो जो डार्क पार्ट है वो भी ब्राइट नजर आ रहा होगा। माई रेटिना सेंसिटिविटी इज टू मच। क्या मतलब है, पहले हम बयान कर चुके हैं। In the darkness, the retinal sensitivity increases. When the very high sensitive retina in the darkness, person enters into the bright light, उसके dark area भी are very bright for this highly sensitive retina. उसकी रिडॉप्शन कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, उसमें जो डार्क एरिया भी वो भी ब्राइट है, ब्राइट तो है ही ब्राइट। तो क्या मतलब है, धूप पे निकलते ही एवरी इज ब्लीच्ड, कोई नजर ही नहीं आ रहा है, एवरी सीन इज ब्लीच, क्योंकि डार्क एरिया भी ब्राइट है, ब्राइट तो ब्राइट ही है, सो देयर इज नो विजिबल। लेकिन ग्रेजुअली देन अडॉप्टेशन अकर्स, ब्राइट लाइट के लिए अडॉप्टेशन इज वेरी क्विक, वो नैनो सेकंड पिको सेकंड वाला देखें, डिकम्पोजिशन ऑफ रिडॉप्शन इज वेरी क्विक अडॉप्टेशन अकर्स। फॉर लाइट अडॉप्टेड आई इवन द ब्राइटर स्पॉट्स आर नॉट विजिबल इन द डार्कनेस, ये भी हमने बयान किया है। बाहर 2 घंटे 4 घंटे रहने के बाद जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो ट्यूबलाइट भी नजर नहीं आ रही होती, बाहर बल्ब लगा हुआ है वो भी नजर नहीं है, इवन बिकॉज आई इज वेरी सेंसिटिव टू इट्स मिनिमम लेवल, उसकी सेंसिटिविटी मिनिमम पे है, तो छोटा सा बल्ब भी लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद नजर आने लगता है। तो अडॉप्टेशन अगर फॉर द लाइट अडॉप्टेड आई इवन ब्राइटर स्पॉट्स, यानी छोटा सा बल्ब लगा हुआ वो भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आई की सेंसिटिविटी नहीं है। थोड़ी देर अडॉप्ट करेंगे फिर पता चलेगा वहां छोटा सा बल्ब भी लगा हुआ है। So light adaptation occurs more quickly than the dark adaptation, ये तो हमने बात कर दिया कि because the decomposition is very quick, picosecond, nanosecond में होता है, and the resynthesis is in minutes. So dark adaptation may take more than 1 hour to reach its completion. So this is important. So that is how the photochemistry of VN. So next time ये इसको जरा सा और अप्लाई करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। यही बात है कि फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कलर VN, ये थोड़ी सी बात कर दी है, कलर ब्लाइंडनेस का जिक्र हमने करना है नेक्स्ट टाइम का, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कलर VN। कलर हम कैसे देखते हैं, कौन 3 किस्म की कौन हम करेंगे, तो सारे कलर 3 कौन के इस्तेमाल से हम कैसे देखते हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कलर VN। तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, डाल दें अपने कमेंट सेक्शन में, आई विल आंसर, एंड प्लीज डू शेयर दी स्लाइड्स फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी सीखना चाहें इससे, और सदका जारिया हमारा रहे, आपका भी रहे। थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।